He has also initiated the annual job fairs and HR meets in order to provide mass placement and to build the much required university industry interface. He has been facilitated by corporate houses and student group for his contributions toward the career building of student community. He is appointed as Publication cum Sales Officer in the Publication Division on 16 March 2017. With this brief intro, I would now request our resource person to kindly proceed. Over to you, sir. Sir, unmute yourself. You are. Oh, okay. It's not. A very good evening to all of you. Thank you. I hope I am audible to all of you. Yes, sir. You are audible. First of all, I am really thankful to Mr. Rafiq, Director, Bharat Digital Academy, for inviting me here to address the wonderful audience, the youth of the country. It's always an honor to talk on such an important issue, which I would believe is the major concern for all of us, which is career planning. I am also thankful to my colleague and my friend Naushad Saab from Department of Library Science for always gracing the important occasions like this. Thank you, sir, for being here. It's always nice to see you. And I'm sure that we'll also listen words of wisdom from your side. So, with the permission of the chief guest, I would like to start my humble talk. My small query to the host is, Ms. Khatun Fatma, may I know what is the nature of the audience right now? I mean, there are students who are attending this workshop, or it's a mixed gathering. It's a mixed gathering, sir. It's mixed gathering. Fine. So I will be very general in my talk, and I will be sharing my experiences as you may say as a TPO, or because I am in this industry for the last around 20 years. And so I would like to share my experiences with all of you, especially related to, obviously, to career planning. So I won't take much of the time because Naushad Saab is already here. So, with his permission, I'd just like to share some of my experiences. Now, my dear friends and my dear participants, actually, the problem is, जैसे अभी टॉपिक यहाँ चुना है career skills development. तो मैं एक चीज़ ये आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों को are you clear what does a career mean? Because first of all, we need to understand what is a career. क्योंकि मैं as a placement officer भी मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि most of the job seekers or most of the students, they are confused between a job and a career. तो हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि एक career होता क्या है. Career is basically, I would believe, is the accomplishment of an aim or a purpose. All right. So career is a long-term thing. Career is a vision actually. For example, अगर हम किसी भी course को join करते हैं, for example, we pursue course in management or engineering or say library science or science, life sciences, whatever. तो हम एक aim लेके अपना admission लेते हैं. हम एक vision लेके अपना admission लेते हैं. हम ये plan करते हैं कि actually हमें life में करना क्या है. तो unfortunately ये जो एरिया है ये एक मेजर कंसर्न का एरिया है क्योंकि व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय स्टडीज इन एमयू वे बैक इन 90s the most common question prevalent in the campus was what next, and unfortunately there is a sizable number of students who are facing the same problem today, and that is what next. और ये जो सवाल है what next, ये 10th क्लास लेवल पे भी है, ये 12th क्लास पे भी है, ये यूजी में भी है और ये पीजी में भी है, और आई एम सॉरी टू से इवन पीएचडी लेवल में भी है, बिकॉज आई मीट लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इन माय ऑफिस, एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर इन द फाइनल ईयर्स. तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम सबके ऊपर कि ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स इवन जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, और इवन काफ़ी कुछ उसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज में भी, और वो आके ये कन्फ्यूजन मुझसे शेयर करते हैं कि सर मैं नो डाउट मैं एमबीए कर रहा हूँ, मैं नो डाउट मैं एमएसडब्ल्यू कर रहा हूँ, नो डाउट मैं उर्दू में हूँ, नो डाउट मैं इंजीनियरिंग, इवन इंजीनियरिंग और लॉ के बच्चे, मतलब जो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक इंजीनियरिंग कर रहा है लड़का तो उसको कोई फर्दर मदद की जरूरत नहीं है, या लॉ में है तो कोई फर्दर मदद की जरूरत नहीं है, या एमबीबीएस में है तो कोई फर्दर मदद की जरूरत नहीं है.
जो मेरे हिसाब से गलत है। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई बंदा अगर प्रोफेशनल कोर्स में है तो ही और शी डज नॉट नीड एनी फर्दर करियर गाइडेंस। तो मेरे पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज के स्टूडेंट्स आके मिलते हैं एंड दे डिस्कस इश्यूज विद मी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। और आई एम रियली हैप्पी कि रफीक साहब हैज टुक दिस इनिशिएटिव। लेकिन मेरी रफीक साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये बहुत ब्रीफ सा सेशन है और ये एक हम अपने छोटी मोटी हमल नॉलेज से अपने पार्टिसिपेंट को सेंसिटाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है रफीक साहब से और मेरी सर्विसेज भी हैं कि हम लोग आप रफीक साहब लाइक हाउ यू कैन प्लीज एक्सप्लोर कि हाउ कम भारत डिजिटल एकेडमी कैन कोलैबोरेट विद एमयूज टीपीयू ऑफिस एंड वी कैन इनवाइट रजिस्ट्रेशंस एंड गो फॉर फ्री, ऑब्वियसली फ्री वन टू वन करियर काउंसलिंग। क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि जो हम लोग वन टू वन इंटरेक्शन करते हैं सामने बैठ के और फिर जब हम डिस्कस करते हैं तो हम एक बेहतर नतीजों पे आ पाते हैं। तो मेरी सर्विसेज, मेरा प्रपोजल ये आपके लिए ओपन है रफीक साहब। आप जब भी कहें चाहें रमज़ान के बाद जब भी आपको फिजिबल हो आप मुझे बता दीजिएगा और आप एक नोटिफिकेशन कराइए कि जो बच्चे चाहते हैं कि वन टू वन काउंसलिंग करना चाहें तो वो मैं हूँ, नौशाद साहब है, कई ऐसे लोग हैं यूनिवर्सिटी में जो हम एज ए टीम आपके साथ आ सकते हैं और वी कैन काउंसिल द स्टूडेंट्स। सो दैट इज ऑफर फ्रॉम माई साइड एंड आई बिलीव कि नौशाद साहब जैसे लोग और भी लोग जो है अपनी सर्विसेज देने को तैयार होंगे। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एक छोटी सा मैं आप लोगों को ऑडियंस से एक पीपीटी शेयर करूंगा, बहुत छोटा सा है जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है इस प्रेजेंटेशन को लेकर। तो मैं जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एंड देन आई विल मूव फर्दर। Is it clear to all of you this slide, marble story? Yes sir, it's clear. Okay. So ये एक छोटी सी हाइपोथेटिकल स्पेनिश स्टोरी है, इसका नाम है मार्बल स्टोरी। और मैं पार्टिसिपेंट से कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि ऐसा लग रहा है जैसे एक स्टैचू है जो किसी से बात कर रहा है। एक्चुअली ये इंडिकेट किया जा रहा है कि ये देखिए ये जो नीचे ये है, ये जो वाइट वाइट स्पॉट्स है, दे आर कॉल्ड मार्बल टाइल्स जो फ्लोर में लगे हुए हैं और ये स्टैचू भी मार्बल का है। Sir, you have not opened the folder. Sorry? You have not opened the folder. Just hold on. Just hold on, please. Now is it clear? Oh sir, still same. आपको एक स्क्रीन नजर आ रहा है मार्बल स्टोरी का? Yes sir, मगर ये फोल्डर ओपन नहीं हुआ ना, ये ऐसे लिस्ट दिखा रहा है हमें कुछ। अच्छा लिस्ट दिखा रहा है, ओके जस्ट होल्ड ऑन। फोल्डर ओपन नहीं हुआ है। ओके जस्ट होल्ड ऑन, आई एम जस्ट ओके। Can you give me just 10 seconds, please? Yes sir, no problem. Just hold on, please. No issue sir, take your time. Now is it shared? No sir, still same. Folder open नहीं हुआ है। Folder open. Saad, you are sharing the entire screen or tab?
Yes, yes. No, it is. Now, is my voice audible? Yes, sir, Yes. you're audible. Okay. Is the screen clear to all of you? It's called marble Yes, story. it's quite clear. I'm Proceed. sorry, there was some technical this thing. Sorry for the No issue, sir. No issue, sir. No sorry issue. for the inconvenience caused. Okay, No so issue, now sir. it's a small story. It's called marble story. I like to share this story with all of you because I personally like it. So मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ. ये एक मार्बल स्टोरी है जो कि ये जो है आप देख रहे हैं कि एक मार्बल स्टैचू है और ये इट अपीयर्स एज इफ इट इज टॉकिंग टू समवन. तो ये एक नीचे स्टोन्स हैं. तो देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में. तो देयर वाज दिस म्यूजियम laid with beautiful marble tiles. ये जो नीचे टाइल्स लगे हुए फ्लोर में. There was this museum laid with a beautiful marble tiles with a huge marble lady statue displayed in the middle of the lobby. Now, many people came from all over the world just to admire this beautiful marble lady statue. Now, one night, the marble tiles started talking to the marble lady. ये जो फ्लोर में टाइल्स हैं, they started talking to the marble lady. Now, marble tile कहता है marble lady से कि marble lady, it's just not fair. It's just not fair. Why does everybody from all over the world come all the way here just to step on me while admiring you? It's not fair. तो मार्बल लेडी कहती है, माय डियर फ्रेंड मार्बल टाइल, डू यू स्टिल रिमेंबर दैट वी आर एक्चुअली फ्रॉम द सेम केव. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. माय डियर फ्रेंड मार्बल टाइल, डू यू स्टिल रिमेंबर दैट वी आर एक्चुअली फ्रॉम द सेम केव. क्या तुम्हें याद है हम दोनों एक ही खान से निकले हुए हैं? अब ये आप इसको रिलेट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, क्लास से कर सकते हैं, सेम डिग्री से कर सकते हैं. तो वो कहता है कि यस दैट्स व्हाई आई फील इट इज इवन मोर अनफेयर. We were born from the same cave and yet we receive different treatment now. ये और अनफेयर है कि हम दोनों एक ही जगह से निकले हुए हैं लेकिन हम दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है. ये फेयर नहीं है. तो मार्बल लेडी कहती है, then do you still remember the day when the designer tried to work on you but you resisted his tool? कि तुमने जब तुम पे काम करने की कोशिश की गई थ्रू मेंटर्स, थ्रू काउंसलर्स, थ्रू टीचर्स, थ्रू सीनियर्स, तो तुमने कहा कि नहीं मैं तो ऑलरेडी मार्बल टाइल हूँ, मुझे किसी फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. Yes, of course, I remember. I hate that guy. How could he use his tool on me? It hurt so badly. Mobility कहती है, that's right. He couldn't work on you at all as you resisted being worked on. तो तुमने resist किया कि नहीं, I don't need any further improvement. I'm already a marble type. So marble lady कहती है कि when he decided to give up on you and start working on me instead, I knew at once that I would be something different after his efforts. I did not resist his tool. Instead, I bore all the painful tools he used on me. आखिर में कहता है मार्बल स्टैचू मार्बल टाइल से, माय फ्रेंड मार्बल टाइल, देयर इज अ प्राइस टू एवरीथिंग इन लाइफ. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड. माय फ्रेंड, देयर इज अ प्राइस टू एवरीथिंग इन लाइफ. Since you decide to give up halfway, you can't blame anybody who steps on you now. Since you decide to go up halfway, you can't blame anybody who steps on you now. So the moral of the story is, the more hard knocks you throw in life, the more you will learn and put them to use in the future. Don't be discouraged by setbacks, challenges, and failures. No pain, no gain. Past is past, you can't change it, but it is actually a blessing in disguise. Past was good, present is better, and the future will always be the best. And the most important moral of the story is, the most important learning is for you all is this: keep yourself focused on your highest values, your goals, and your aspirations in life. Now, the important this learning is, keep yourself focused on your highest values, your goals, and your aspirations in life.
All right. Now, before I move further, I would like to have two small feedbacks, feedbacks from the audience before I move further. ये जो आपको मैंने छोटी सी एक मार्बल स्टोरी दिखाई और आपने इंटरेक्शन देखा बिटवीन मार्बल टाइल एंड अ मार्बल स्टैचू. मेरी आपसे कोई भी दो पार्टिसिपेंट्स अपने आप को अनम्यूट करके ये बता सकते हैं कि उन्होंने क्या लर्निंग सीखी इससे. यस प्लीज, एनीबॉडी, एनी टू responses, or it may be three also. Participant can unmute. Good evening, sir. Yes, Nazni, Mubin, आपको क्या लगता है कि आपने इससे क्या सीखा? Yes, sir. By the story, we learned that we never give up, sir. Okay, so Nazni का कहना ये है कि इन्होंने इस स्टोरी से ये सीखा that one should never give up. Very good, Nazni. Thank you very much. Yes, anybody else? Yes, please. Sir, everyone around you is like a khizr. You seek wisdom from them. So try to seek wisdom from your faculty members and other staff. Very good. Mohammad Syed gave a wonderful insight. We should learn from others. We should always ready to learn. I think it's a wonderful insight. कि हमारे आसपास भी विजडम है, हमारे आसपास भी अच्छे लोग हैं, तो हमें दूसरों से अच्छी बातें सीखते रहना चाहिए. और मैं जैद की इस बात से एग्री करता हूँ कि एक बड़ी अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं लर्निंग टेंडेंसी. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक मेरे ख्याल से किसी ने चैट बॉक्स पे डाला है कि टू लर्न समथिंग वी हैव टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन. वंडरफुल तारिक, आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ वंडरफुल फीडबैक. कि तारिक ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हमें कुछ करना है जिंदगी में, कुछ सीखना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. इसमें कोई शक नहीं है. थैंक यू तारिक फॉर गिविंग अ वंडरफुल इनसाइट. Now, my dear friends, as you know, I want to move further. We have got limited time. तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए मैंने आपको दिखाई कि देखिए यही प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम लोग रिस्पेक्टिव डिग्रीज तो ले रहे हैं, लेकिन हमें आने वाले वक्त में जो भी हमारा करियर है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब अगर हमें करनी है, या हमें प्राइवेट जॉब करनी है, या हमें टीचर बनना है, या हमें अपना काम करना है, जो भी करना है, तो वो वहाँ पहुँचने के लिए हमें करना क्या होगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, जहाँ जो हम बनना चाह रहे हैं उस जगह के एक्सपेक्टेशंस क्या है. तो मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि पिछले 10 साल में मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में बात कर सकता हूँ कि हमारे बच्चों में, हमारे यूथ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ पर्पस की कमी मुझे नजर आ रही है. मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ है, लेकिन एक अच्छी खासी साइजेबल ऑडियंस है जिसके साथ क्लैरिटी ऑफ पर्पस की दिक्कत है. और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब मेरे पास बच्चे आते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर हमने 5 जगह फॉर्म भर दिया और यहाँ हमारा हो गया, इसलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि दिस शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया फॉर योर करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मुझे लगता है वो है क्लैरिटी ऑफ पर्पस. वो कहीं ना कहीं हमारी आपकी करियर प्लानिंग से वो चीज़ लैक कर रही है. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका एम लाइफ में डिसाइडेड है, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है और आप कंफ्यूज हैं, तब भी अच्छी बात है, जो ये इंडिकेट करता है कि एटलीस्ट आप एफर्ट्स कर रहे हैं. कंफ्यूजन होना कोई दिक्कत की बात नहीं. और अगर कोई आप में से ऐसा भी पार्टिसिपेंट है जो कुछ कर रहा है ऑलरेडी और उसको अभी भी कंफ्यूजन है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी में हमारे लिए हर दिन नया दिन होता है. अगर हमें अपनी जिंदगी में, देखिए मैं अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरा अपना करियर शुरू हुआ व्हेन आई वाज 36 इयर्स ओल्ड. तो 36 साल की उम्र में जाके मुझे एहसास हुआ कि मुझे जिंदगी में क्या करना है. तो आप लोग तो अभी मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा इस ग्रुप में 2-4 लोगों को छोड़ के जो शायद 36 इयर्स को क्रॉस कर गए. लेकिन आई डोंट रिग्रेट दैट. मुझे लगता है कि मेरे पास लैक ऑफ गाइडेंस की कमी की वजह से, मेरे पास लैक ऑफ काउंसलिंग की कमी की वजह, मतलब लैक ऑफ काउंसलिंग की वजह से शायद मैंने जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे. लेकिन ठीक है, मैंने उससे सीखा. तो मेरा अपना मानना ये है, मेरी फिलॉसफी तो ये है कि व्हेन यू डू समथिंग, ईदर यू विन और यू लर्न, यू डोंट लूज. तो जिंदगी में गलती वही लोग करते हैं जो कभी कुछ करते ही नहीं. तो ठीक है, हमसे गलती हुई, हमने कुछ गलत फैसले किए, कोई दिक्कत की बात नहीं. लाइफ मस्ट मूव ऑन, द शो मस्ट गो ऑन. हमें तो एक पानी की धारा की तरह होना चाहिए कि साहब पानी मूव कर रहा है, सामने पत्थर आया, हम टकराए, अगर हमें लगता है कि नहीं इसमें हम इसके डायरेक्शन में नहीं जा सकते, हमने अपनी साइड चेंज करें और मूव करें. तो वी शुड बी लाइक दैट ओनली. मैंने देखा है कि लोग मतलब 40s में जाके उनका करियर बनता है.
मेरा अपना करियर बना व्हेन आई वाज 36 इयर्स, बट बाय अल्हम्दुलिल्लाह बाय अल्लाह's ग्रेस जब मुझे लगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए तो मैंने इतना काम किया कि मेरा पिछले तक का सारा बैकलॉग पूरा हो गया, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज व्हाट दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू, दिस इज व्हाट आई एंजॉय टू डू। तो जब हमें जिंदगी में वो काम करते हैं जिस जो हमें अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होता है। तो मेरी क्योंकि इट्स अ मिक्स्ड ऑडियंस तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहली जो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए दैट इज़ क्लैरिटी ऑफ पर्पस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ज़िंदगी में कामयाब होना क्यों है। अब होता क्या है कि कोई आईएएस आया तो आपको लगेगा कि मुझे आईएएस बन जाना चाहिए, कोई प्रोफेसर आया तो आपने कहा मुझे प्रोफेसर बन जाना चाहिए, कोई एंटरप्रेन्योर आया आपने कहा मुझे एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम वी गेट कंफ्यूज बिटवीन फैसिनेशन एंड इंस्टिंक्ट। तो हम बहुत जल्दी लोगों से फैसिनेट हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचानते कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। बगैर ये जाने अगर मैं दूसरों को सुनूंगा तो ऑब्वियसली मैं फैसिनेट होऊंगा, और फैसिनेशन डाइज टू अर्ली। फैसिनेशन इज वेरी रिस्की माय डियर फ्रेंड्स। फैसिनेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, फैसिनेशन नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब तक मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। और अल्लाह ताला ने, गॉड ने किसी को इस दुनिया में यूजलेस नहीं पैदा किया। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी लेके आया है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि विदाउट गाइडेंस हमें कहीं ना कहीं उस स्पेशल क्वालिटी को नहीं पहचान पाते राइट टाइम पे, और उसके बाद फिर हमारी लाइफ में स्ट्रगल पड़ता है। तो मेरी आपसे और मेरा मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि हम हमारी ज़िंदगियों में हमारे पास सबके लिए टाइम होता है। हमारे दोस्तों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए, हमारे सेमेस्टर्स के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, लेकिन हमारे करियर डेवलपमेंट के लिए हम उतना टाइम नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो मुझे सुन रहे हैं और जो जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होती है, ये कोई चीज़ एबनॉर्मल नहीं है, ये सबके साथ होती है। लेकिन बस थोड़ा सा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैं एज अ पर्सन क्या हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, और कौन से ऐसे करियर है जो मेरी पर्सनैलिटी से मैच करते हैं। तो एक प्लान ए बनाइए और एक प्लान बी बनाइए और उस पर स्टिक करने की कोशिश करिए। देखिए, ड्रीमिंग विदाउट स्ट्रेटेजी इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो सिर्फ ड्रीम करने से काम नहीं चलेगा, ड्रीम के साथ साथ स्ट्रेटेजी होना जरूरी है, और ड्रीम प्लस स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू एम। काश मैं आईएएस बन जाऊं, ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन मुझे आईएएस बनना है बाय द ईयर, इतना इतना बन जाना है, इसको हम एम कहते हैं। और एम जब बनता है जब मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करता हूँ। इसलिए नहीं है कि साहब, अब मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे आईएएस बनना है, मैं पूछूं आपको आईएएस क्यों बनना है, आपके पास कोई जवाब नहीं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो? उसने कहा सर आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। मैं चाहता हूँ कि मैं समाज में चेंज लेके आऊँ विद अथॉरिटी। क्लियर कट विजन है उसका। एक छठी क्लास की बच्ची से मैं पूछता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, वो कहती है सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मुझे लगा कि शायद उसने ऐसे ही कह दिया होगा, बट सी हर इंस्पिरेशन। उसने कहा कि सर मुझे लगता है कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो अल्लाह ताला की मखलूक की सेहत का जरिया बनता है। मैं मैनकाइंड के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं इंसानियत के लिए काम करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है हेल्थ एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ मैं काम कर सकता हूँ। ये एक छठी क्लास की बच्ची का इंस्पिरेशन। तो जो क्लैरिटी ऑफ पर्पस है ना, वो अगर हमारा क्लियर है तो मेरा मानना है कि द बिगर इज योर व्हाई, द स्मॉलर इज योर हाउ। अगर हमारा व्हाई क्लियर है कि मुझे जिंदगी में कामयाब होना क्यों है, अगर ये क्लियर है कैसे वो होना है अपने आप आसान है। यहाँ हमारे उल्टा होता है, हमारा हाउ हम पे हैवी रहता है, अरे कैसे होगा, अरे नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर इंस्पिरेशन है, हमारी जिंदगी में वाई क्लियर है और क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, तो मेरा पूरा यकीन है कि आप जिंदगी का हर मरहला तय कर सकते हैं, क्योंकि दैट लीड्स टू पैशन। फिर आप पैशनेट हो जाते हैं, फिर आप अपने एम से मोहब्बत करते हैं, फिर आप अपने एम से इश्क करते हैं। जब आपको किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है, फिर आप उसको हर तरह से पाने की कोशिश करते हैं। वो जुनून होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। आईएएस फरिश्ते नहीं बनते, साइंटिस्ट फरिश्ते नहीं बनते, टीचर फरिश्ते नहीं बनते, हम जैसे लोग बनते हैं। बस उनके पास क्या चीज़ होती है, क्लियर कट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग विद राइट एटीट्यूड, विद राइट पैशन, विद दैट बर्निंग डिजायर। अगर ये क्लियर है तो मेरा अपना यकीन है कि आप जिंदगी में इंशाल्लाह हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। जिंदगी में कोई चीज़ मुश्किल नहीं। आप यू कैन अचीव एनीथिंग, बट द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू हैव द राइट माइंडसेट। आप दुनिया में जितने भी लोग लाइफ में कामयाब हुए हैं किसी भी फील्ड में, आप देखिए सबके अंदर एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है उनका एटीट्यूड,
उनका माइंडसेट पॉजिटिव था, उनको यकीन था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, और वो कामयाब हो गए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग जिनका करियर अभी प्लान नहीं है वो प्लीज अपना इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर दें। अगर उनको लगता है कि आपको किसी से शेयर करना है, आई एम देयर टू ऑफर माय सर्विसेज। यू कैन ऑलवेज कम टू माय ऑफिस, मीट मी। आप मुझसे बेहतर किसी इंसान से मिलिए जो मुझसे ज़्यादा लर्नेड है, उससे आप जाके मिलिए, बट प्लीज शेयर जरूर करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने क्लैरिफिकेशन जाके किसी से शेयर करिए और कहिए कि सर या मैम ये मैं सोच रहा हूँ, क्या ये सही है, मेरा मिजाज ये है, मेरी स्ट्रेंथ्स ये है, मेरी वीकनेस ये है, तो क्या इसके हिसाब से करियर ठीक रहेगा? वरना फिर क्या होगा कि आप एक ऐसा करियर चूज करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। जो आपको पसंद नहीं है तो आप एक एवरेज परफॉर्मर बनेंगे, और एवरेज परफॉर्मर की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। यू हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट। मेरे जमाने में लेवल ऑफ कंपटीशन ये था कि साहब ये कामयाब है क्योंकि ये अच्छे हैं, ये कामयाब नहीं है क्योंकि ये खराब है। आपके जमाने में लेवल ऑफ कंपटीशन ये है कि ये कामयाब है क्योंकि ये परफेक्ट है, ये कामयाब नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है। नाउ दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन, माय डियर फ्रेंड्स, and I sincerely believe that if you are average, you will face competition at every step of your life. But if you are good, there is no competition. So you have to, आप खुद अपने लिए कंपटीशन क्रिएट करते हैं और खुद आप कंपटीशन को खत्म करते हैं अगर आप अच्छे हैं। तो आपको जो पसंद है वो आप करिए। आज मतलब माशाल्लाह, ऑल ऑफ यू आर सो फॉर्चुनेट दैट इवन योर हॉबी कैन बी योर करियर। हमारे ज़माने में क्या था, इंजीनियर, डॉक्टर। आपके ज़माने में आपको जो पसंद है उसमें करियर मौजूद है। हम तो अगर हम एलयू के पर्सपेक्टिव में बात करें, कौन आप सोचिए, अगर आपको खेलना कूदना पसंद है, फिजिकल एजुकेशन। आपको घूमना पसंद है तो एमटीटीएम। आपको दूसरों की मदद करना पसंद है तो एमएसडब्ल्यू है। आपको लिखना बोलना ये सब पसंद है तो मास कॉम है। मतलब क्या नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। आपको रिसर्च ओरिएंटेड है आप, तो आप जा सकते हैं बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो व्हाट आई जस्ट होल्ड ऑन, आई एम गेटिंग अ कॉल प्लीज। अंजलि, मैं एक कॉल। आई एम सॉरी, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कंपनी एचआर। तो मैं आपसे बस ये अर्ज कर रहा था कि 3 चीज़ों पे काम कर लीजिए। मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। पहली चीज़, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें यू शुड बी गुड इन दैट, यू शुड बी गुड इन योर सब्जेक्ट। डिग्री ठीक है, डिग्री तो मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ बात हो रही है नॉलेज की। वॉट एवर यू आर स्टडीइंग, साइंस, लाइफ साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, एजुकेशन, जो भी आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको अच्छा होने की जरूरत है। यू शुड बी गुड इन योर सब्जेक्ट। दूसरा, you should have good command over your communication skills. यहाँ communication skills में अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है सर। You should be good in your writing and you should be good in your spoken. क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं कहीं सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपसे। The moment you open your mouth, the other person comes to know who you are. तो आप बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आप किस टाइप के इंसान। तो communication skills बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ सोचते हैं communication मतलब है कि डिबेट करना, जीडी करना, ये सब तो है, लेकिन रोजमर्रा कम्युनिकेशन भी हमारा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप लाइफ में जो बनना चाहे बनिए, आप कहीं पर भी अकेले काम नहीं करेंगे, आपको एज ए टीम में ही काम करना पड़ेगा। तो व्हेन यू कम्युनिकेट, योर स्किल्स शुड बी गुड। एंड द थर्ड वन इज पॉजिटिव पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते रहना होगा। और मेरा अपना मानना यह है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोचिंग से नहीं हो सकता। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा बाय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ इवेंट्स, by being the part of competitions, by making good friends, by reading, by reading about successful people. बहुत सारे तरीके हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के। ऑलराइट, अगर आपने इन 3 चीज़ों में काम कर लिया, मेरा अपना मानना ये है कि इंशाल्लाह आपकी जिंदगी का स्ट्रगल बहुत कम हो जाएगा। पहली चीज़, यू शुड बी गुड इन योर सब्जेक्ट। दूसरा, यू शुड हैव गुड कमांड ओवर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। And the third one is you should be a person with positive personality. मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, बस उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। एक दो एग्जाम्पल देने के बाद आपके जहन में आता है कि साहब व्हाट इज पॉजिटिव पर्सनैलिटी। मैं आपको एक इंटरव्यू का 2 एग्जाम्पल देता हूँ, एक यूपीएससी का और एक प्राइवेट जॉब। एक बार एक आईएएस एस्पिरेंट से किसी ने पूछा, एक पैनल ने पूछा, जैसे ही द मोमेंट दे एंटर्ड द इंटरव्यू रूम, somebody I read it somewhere, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो जब उसने एंटर किया तो पैनल ने उसको देखा और कहा, we hate to see your face, because they were just trying to identify his self-confidence. And that gentleman smiled and he replied, well sir,
with all the due respect, the feelings are mutual. And the interview started. Now they were trying to judge his self-confidence. इसको हम कहते हैं self-confidence. एक इंटरव्यू में किसी से पूछा, the candidate entered the room and he said, "Good morning, sir." पैनल ने कहा, "What is good about this morning?" And that gentleman said, "Well, sir, this morning is very good for me because today I'm going to interact with a learned panel like you, sir." And the interview started. एक कंपनी हमारे आती है, आईटी की बहुत बड़ी कंपनी आती है, तो एक बार मैं एक हमारे स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहा था, तो उससे एचआर ने कहा आखिर में कहा इंटरव्यू के एंड में कि मिस्टर एक्स, यू आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग बट आई एम सॉरी योर इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, तो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू. उसने सोच के ये जवाब दिया कि सर, यस सर, आई रिस्पेक्ट योर ऑब्जर्वेशन. I know my English is not as good as it should have been. But sir, I'm working on it. I'm taking advice from my seniors. And I assure you, sir, when I join your company in the month of August, you will find a different person in me. Please give me a chance, I'll prove myself. And he is working in that IT company for the last 7 years. Now, my dear friends, this is what we call positive personality. हमेशा में मेरी बात याद रखिएगा, पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाले लोग रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस पे, रिएक्ट कभी नहीं करते. पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाले वो लोग होते हैं जिनका जिंदगी में अप्रोच बैलेंस्ड होता है. जब हम बैलेंस अप्रोच रखते हैं तो हमारे रिएक्शंस भी बैलेंस्ड होते हैं. और जब हम एक्सट्रीम पर्सनैलिटी रखते हैं, खासतौर से अगर हमारा नेगेटिव माइंडसेट होता है, तो हमारे रिएक्शंस भी फिर नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव रिएक्शंस के फिर अपने नुकसान आते हैं. तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये मैं हो सकता है कोचिंग से डेवलप हो जाती हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि बेहतरीन तरीका है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का बाय स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कल्चरल इवेंट्स, लिटरेरी इवेंट्स, ऑलराइट, रीडिंग, all these things will develop. Or by Allah's grace, AMU provides a wonderful opportunity to develop your personality. हमारे पास क्या नहीं है, स्पोर्ट्स, ऑल फंक्शंस, कल्चरल फंक्शंस, फला फोरम, ये क्लब, वो क्लब, क्या नहीं है हमारे पास. तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जब यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और जब हालात और बेहतर हो जाएंगे और हम लोग फुल तरीके से विल बी इन द कैंपस, तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ क्लब्स को ज्वाइन करिए, फोरम्स को ज्वाइन करिए, हॉल फंक्शन में पार्टिसिपेट करिए, हॉस्टल फंक्शन में पार्टिसिपेट करिए और इस नीयत से करिए कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है. ऑलराइट, तो ये चीज़ बहुत, 2-3 चीज़ों पे काम करने की आपको ज़रूरत है. बस एक लास्ट बात और करूँगा कि अपने, देखिए किसी का एम छोटा बड़ा नहीं होता. हो सकता है कि आपके किसी दोस्त को आईएएस बनना हो सकता है आपको सिंगर बनना हो सकता है आपके किसी दोस्त को जो है वो प्रोफेसर बनना हो सकता है आपको आर्टिस्ट बनना हो. किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है. आपको लगता है कि आपका एम डिसाइड हो चुका है, अब आपको उस पर काम करने की जरूरत है फोकस्ड अप्रोच के साथ. किसी का एम छोटा बड़ा नहीं होता, हम सबका इस पे एम हमारे लिए स्पेशल है. और जब हमारे लिए वो स्पेशल है तो हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अपने एम से मोहब्बत करिए, किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है नेगेटिव तरीके से. हाँ, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए, अपनी गलतियों पे काम करिए. एक अंग्रेजी की कहावत है कि failures and mistakes can be embarrassing, but if you learn from them, they become your experience, and that leads you to success. तो अपनी गलतियों को पे काम करेंगे ताकि वो ये मेरा एक्सपीरियंस बने और ताकि मैं आगे बढ़ूँ जिंदगी में. ठीक है, and take risk in life, take meaningful risk in life, don't be afraid. All right, self belief, self esteem. दुनिया आपको कहे साहब इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, ठीक है, जो कुछ भी है, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने बारे में एक हाई रिगार्ड रखिए, ताकि आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, आई कैन डू इट. फाइन. दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हम सब, लेकिन अल्लाह ताला ने हम सबको स्पेशल बनाया है. तो इस चीज़ पे ईमान रखिए और इस चीज़ पे प्राउड फील करिए. फाइन. क्योंकि अल्लाह ताला को, गॉड को जिससे जो काम लेना है वो लेके रहेंगे, इसलिए आप परेशान मत होइए. और हमारे एक इंसानी नेचर है कि हम उन चीज़ों को लेके ज़्यादा परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे कंट्रोल में फ्यूचर नहीं है, हमारे कंट्रोल में प्रेजेंट है. अपने प्रेजेंट पे काम करिए, अपने प्रेजेंट को अच्छा करिए. मेरे यकीन है कि इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं. दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. ऑलराइट. और छोटी मोटी परेशानी से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं. कभी आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कभी आपको लगेगा कि यार हो नहीं पाएगा, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है. लेकिन एक चीज़ जो आपका हमेशा साथ देगी और हर स्ट्रगल में आपका साथ देगी, वो है आपका एटीट्यूड. अपना एटीट्यूड हमेशा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है. दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं आज तक, वो उन्होंने भी इसी फेज से गुजरे जिससे मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. एक अंग्रेजी कहावत है कि अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाटएवर ही थिंक्स ही बिकम्स.
आप जैसा सोचेंगे या फिर आप वैसे ही बन जाएंगे। आप इंशाल्लाह अच्छा सोचेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा बनेंगे, अच्छा करेंगे। और एक और बड़ी अच्छी फिलॉसफी है कि वेव्स आर इंस्पायरिंग, पानी की लहरें, वेव्स आर इंस्पायरिंग नॉट बिकॉज दे राइज एंड फॉल बट ईच टाइम दे फॉल दे नेवर फेल टू राइज अगेन। ये इंपॉर्टेंट है। गलती होती है इंसान से, गलती से इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। तो फिर मैं फिर कह रहा हूँ, द ओनली पर्सन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक इज अ पर्सन हु नेवर डज एनीथिंग। ऑलराइट, इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड द कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, क्वालिटी लोगों के साथ बैठिए। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोस्ती मत करिए, आप आपके लिए एक लेजर टाइम भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जहाँ से आप कुछ सीख सकें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी पीपल के साथ। ऑलराइट, और नेगेटिव लोगों से बचिए जो कहते हैं यार तुमसे तो हो नहीं पाएगा, आईएएस बनना तो बड़ा मुश्किल है, प्रोफेसर बनना बड़ा मुश्किल है, फला बनना बहुत। ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, और कुछ ऐसी जगह बैठिए जहाँ से आप कुछ सीख सकें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, डोंट पास योर टाइम, ट्राई टू स्पेंड योर टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ इज वेरी प्रीशियस, टाइम इज वेरी प्रीशियस। अल्लाह ताला ने, गॉड ने, भगवान ने हमें हर तरह से अलग बनाया है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है और वो है टाइम। ना तो किसी के पास 23.5 घंटे हैं, ना किसी के पास 24.5 घंटे। इन्हीं 24 घंटे का हमें बेस्ट यूज करना है और जिंदगी में आगे बढ़ते चला जाना है। ठीक है, तो विद दिस नोट, यू नो, प्लीज अपने अपने करियर को प्रॉपर्ली प्लान करिए, अपने एम को डिसाइड करिए। नहीं है, दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, लोगों से मशवरा करिए, जिससे भी आपको लगता है कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं उससे कनेक्ट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, और प्लीज अपने जो भी आपका एम है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जो भी आपका एम है उससे मोहब्बत करिए, उसको पैशनेट होइए उसके बारे में। क्योंकि जब तक आप पैशनेट नहीं होंगे, आई एम सॉरी, क्योंकि आप खुद अपने आपको हल्के में ले रहे हैं यार, यू आर टेकिंग योरसेल्फ फॉर ग्रांटेड, तो दुनिया आपको सीरियसली पे क्यों लेगी? So whatever you do it with full belief, with full with positive attitude and with full energy, और इंशाल्लाह। और आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जिंदगी में कामयाबी कभी हमारी आपकी शर्तों पे नहीं आती। जिंदगी हमेशा आती है अपनी शर्त, वो लाइफ में कामयाबी हमेशा आती है अपनी शर्त। तो सक्सेस होने के लिए जो आपको आपको जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है वो करनी है। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको यूपीएससी निकालना पड़ेगा, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट निकालना पड़ेगा, अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको एमबीए करना पड़ेगा, आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी नेट करना पड़ेगा। ये कामयाब होने की शर्तें हैं, तो शर्तें हमें पूरी करनी है। ठीक है, उन पे काम करिए, इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी बनाइए, सही प्लानिंग करिए। किसी ने कहा है कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो सही प्लानिंग करिए, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए, जो आपके लिए बेहतर होगा वो इंशाल्लाह होके रहेगा। लेकिन हमें अपनी एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़नी, 100% एफर्ट्स करने हैं। बाकी फिर उसको कहते हैं कि डू योर बेस्ट, then leave the rest. With this note, I'm really thankful to Rafiq Saab for inviting me here. I'm sorry, my talk was not planned. Whatever I spoke was from my heart. और ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैं अभी बस आके बैठा हूँ। आई वॉज, आपने सुना भी होगा, अभी हमने एक इंडस्ट्रियल विजिट की थी कुछ कॉमर्स के बच्चों की आईसीआईसी बैंक में, तो मैं अभी बस आके बैठा और आके उसी काम में लगा हुआ हूँ। लेकिन क्योंकि ये मैं इस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ, करियर प्लानिंग का मैं विक्टिम रहा हूँ, मुझे कोई बताने वाला नहीं था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मुझे दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ी बहुत सलाहियत दी है, मेरे ज़रिए जो हमारी जनरेशन है, हमारा जो कंट्री का यूथ है, कम से कम उसके साथ ये चीज़ ना हो, हम जितना भी हो सके अपने ज़ात से हम लोगों को जो फ़ायदा पहुँचाएं और उनसे वो गलती ना हो जो हम लोग से गलती हुई है। सो विद दिस नोट, थैंक यू रफीक साहब फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नौशाद साहब, एक्सट्रीमली सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, and thank you Khatun for being a wonderful host. And so thank you my dear students, my dear participants, for listening me so patiently. I don't know मैं आपके साथ जस्टिस कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन आपको जब भी इंशाल्लाह कोई भी आपको बात करनी हो और फर्दर आपको कोई अपनी डाउट क्वेरी करनी हो, तो आप यू कैन ऑलवेज कम टू द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपके हमारे दरवाजे इंशाल्लाह आपके हमेशा खुले हुए, और आप कभी भी आइए इंशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much. It was indeed enriched and enlightened inputs from your side. Thank you so much. Thank you all lot. Now, next we have our chief guest, Professor PM Naushad Ali, Aligarh. Before requesting, it's my honor to give brief intro of our chief guest. Dr. PM Naushad Ali is presently working as professor in the Department of Library and Information Science, AMU, Aligarh, UP, India. Dr. Ali has over 23 years of teaching and research experience. His areas of interest include information management, knowledge management, e-learning, and e-publishing.
Being a prominent researcher and voracious writer, Dr. Ali has published 6 books, edited books, and over 90 research papers in various national and international journals, including Scopus, Web of Science in Drugs journals, and conference proceedings. He is the editor in chief of Journal of Knowledge and Communication Management, published by IndianJournals.com. He also served as chairman, Department of Library and Information Science, AMU, during the period 2009 and 2012. He has successfully completed 6 major research projects in his individual capacity, funded by various funding by various agencies, including DST, UGC, ICSSR. He also completed a group project of UGC, SAP, DRS as Deputy Director, Coordinator, of the project. He al- Presently he is working on ICSSR Empress research project on social media. He is the creator of 2 portals, namely Subject Information Gateway in Information and Technology and List Learning, which have been well received by professionals from more than 130 countries. Professor Ali is also an active member of national and international professional bodies like International Council of Knowledge Management, Academic Society for Research, IAC, SIT, LIA, ISLIC, IATLIS. Currently, he is the VP of Indian Association of Teachers of Library and Information Science. With this, it's my honor to request our chief guest kindly proceed. Sir, over to you, sir. Yes, thank you. Thank you, Fatma, for your nice words. I hope I am audible. You are audible. You are audible. Yes. Okay, thank you. So, today, the evening, which I feel it is very good for me, get an opportunity to hear my friend Saad Hameed for enlightening very good words about how to improve our career and how to choose a career. I feel rather it is a motivational talk where he tried to motivate our students to choose the career. So I thank Mr. Rafiq, the director of Bharat Digital Academy, for organizing such a wonderful workshop and giving me opportunity to interact with you delegates coming from various places of our country as a guest speaker. Many things Saad Hameed have already discussed. He had a very much experience about the training and placement activities of the university, and myself also had worked with him as a placement officer of the Department of Library and Information Science for about 8 to 9 years. Then a lot of things which we gained from that experiences is that our students is lacking some of the skills. And as Saad Hameed have already said, the students are confused, or most of the students are not knowing what career has to be chosen for the job. So, and there is a difference in the job and the career. So, career development, it is a process of a human development. It is a lifelong process of learning and designing of our life. The career development doesn't end after you choose a occupation. That you have to remember. The career development it's going on. It's a lifelong process. It can span your whole life. But thing is that we have to be select. We have to choose a best career according to your taste.
So such a type of workshop which is being organized today, it will be helping the students as well as the faculty members to identify what is their own strength as well as what is their weakness. And they once you identify the weakness and the strength, and then they can improve to the skill which they lacking. So already Sasab is already mentioned there are many skills which is required for a student in their life to achieve a important career in their life. The first career which always I'm saying that Sasab said is a communication. Communication doesn't mean you can speak in English. Communication means you should be very much, you have the ability to speak, to convince, to write, and to listen. So, with these skills, you can understand others and you can share, you can convey your ideas to other members. So, good communicator can speak clearly and confidently. And the tone of your communication should be always positive and it should be appropriate situation. So communicate, anybody can communicate we can use in any language, but you communicate with a smile, you communicate within a pleasant mood, it will give another impact. Or if you're talking a arrogant mood, that will give another negative impact to the audience. I think you must have heard the last week there is a High Court verdict, Delhi High Court. They have made a very important verdict regarding the hate speech. What the Delhi High Court said, there is no criminality if something said with a smile. Okay, if you say something, if it is a negative aspect, if you say it with a smile, or if you made a hate speech with a smile, there is no criminality in this. So what I want to say here, this context, if you speak smile, that will give a very positive impact, even though you are speaking something against that particular person or a group. So you'll be very much impressed with this communication. That we should be reflect your personality. And another skill which I noticed is a social skill, that which we are lacking. The skill which you can mingle with our society, our community, even our family members, that are lacking. Because the reason is because of the impact of the social media. The recent studies which is showing that 5 to 6 hours we are average this person is spending on the social media like WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. That is average, but maybe some people will sign for the 9 to 10 hours, 10 to 12 hours they are spending for the social media. So this is we having many friends in social media, but we are not having the real friends in our life. We lacking this social skills. We lacking this interpersonal communication. We will not be fall interested to meet a people or to visit a place or to interact with anybody physically. And third skill which I will always emphasize to my students is the problem solving skill. Okay, the problem solving skill, because most of the persons, I read an article which is saying 80 to 85% of people they are not interested for any problem solving. They wanted to create a problems. They will talk all negative things. They will see only the negative side. They will always say pessimist. That you will find 85%. Very few people, or 15%, they will be having the ability to solve the problems. Whatever the issues will be there, they try to solve that. So that problem solving capacity, that you have to be managed. And one more skill I would like to say, the self confidence. Okay, you should have belief in your abilities, your actions, and your decisions.
Once you thought that if I cannot do anything, I am very inferior to others. Once you start the feeling, so that means you will be losing each and every battle. I'm sure. You should be. You have the confidence in yourself. You might be more likely to pursue the ambitions of goals. So, how to gain your self confidence? That self confidence you can gain with gaining your knowledge, with gaining your skills. And that Sasabi said, you stay with your good friends, those who are encouraging you, those who are propagating your work, those who are saying good for you or good about you. So that will be helping to improve the self confidence. Then, wherever you're working as a student or a research scholar or a faculty, you should be maintain your work ethics. You should have the completely you make the responsibility and you have determination. You should keep the discipline always. And third, then last quality which I would like to say, your leadership quality. Okay, every leader they will think of others, and they will be always motivate others. So you should any person those who are having they should have a good leadership quality. So these are the things which you have to improve or adapt. Then generally the question will be there: how to improve it? How to improve our personal and development the skills? So I would like to share a story. That story, after completing the story, you will came to know what are the things which you have to improve your personal or development of your skills. Once there was a king who received a gift of two magnificent falcons. You know the falcons; it's a bird. So one king is received a two magnificent falcons. It's a bird which you can see in the Middle East. It's a very costly bird. So the king was very happy to see these two birds. Then after a month, uh, one day that falconer he informed that one of the bird which is not flying. The majesty one of the bird is not flying. It is always sitting on in its branch. So the king said, "What happened? Why is he sitting on that branch? That the falcon is not flying?" Then he invited many healers and asked them, okay, at any cost, you should make the falcon to move. The bird should move from one place to other perch, its perch. And they tried, all the healers have tried many ways, and they couldn't make the falcon to move. Then he made a meeting, and with that intellectuals of that king, they said, maybe we need somebody who is familiar with this countryside to understand what is the nature of this falcon, what happened. So they said we can invite a farmer. Maybe the farmer he know how we can move that falcon from one place. Then the morning the farmer came, and after that, after 1 hour, that falconer he came and said, "There is Majesty, that falcon it started moving, it started flying now." Then king became more happy. He's very happy. So he gave a gift to that farmer and asked, "What you did the miracle? What miracle you did, farmer? How the lot of healers tried to fly that falcon, but we couldn't make it. A lot of doctors they tried for that. We couldn't make it. How you made it? Being a farmer, how you made it?" After a small smile, the farmer said, "It was very easy, My Highness. I simply cut the branch of the tree where the bird was sitting. I simply cut the branch of the tree where the bird was sitting." उन्होंने कुछ नहीं किया फार्मर ने, जो bird जो बैठा रहता था उसका उसी branch को, उसी शाखा को उन्होंने काट दिया, बस इतना ही किया.
So this is a problem which we all are facing now. We are because the bird was in the comfort zone. He was getting food and everything. He's in comfort zone. Why do you want to? Why he's wanted to fly? So this is the problem which we people are now facing. Our students are facing. We are in the comfort zone. We are having a lot of facilities in the hostel. We are having the food in time. We are having the mobile phone and smartphones to talk and to walk, and we are having every facilities. So we don't want to come to the we don't want to come out of this comfort zone. So everybody, we are made to fly. All each and every persons in the country or in the world are made to fly. But there are few people are flying and other people are not flying because we are in the comfort zone. First of all, we should cut that branch, or first of all, we should come out from that comfort zone. Then only we will be able to work hard. As that marble story, the marble lady, the story which Sasa is made. It is showing we have to take pain. Then only we will get success. Sitting in the comfort zone, we will not get any success. Come out of this comfort zone and try to improve our skills, identify our weakness, and come to and try to improve the skills. And don't give up the halfway when the story is still in. You should never give up. I told you, the Alva Edison. He invented the bulb which you give the light to us. He tried around 1,000 times. He tried. He failed around 999 times. Then 1,000 times we tried. Then he only got success. If he given up that time, so what will be happen? We will not get the light. So start on working hard. Not only working hard, work smartly. Smart work will be paying you. So my suggestion to all of these participants is keep on working hard and take a guidance, because most of the people are not getting, because we are having the ability to do the work, we are having the skills, but we are not reaching a particular position because of we are not knowing how to proceed it. Take a mentorship, take a guidance. Okay, it may be your teacher, it may be your placement officer, or the SAS office already offering you to giving all these opportunities and facilities to improve your career. So take a mentor. Okay, nowadays the teacher and students relationship are not getting fruitfully now. Teachers are busy with their improving their what we can say publications. Teachers are busy with improving their H index, and teachers are busy with some other administrative activities. They don't have give much time to the students to mentoring it. Similarly, students are not interested about that area. They are very not serious about that. They wanted to sit in the dabas for hours together and talking and chatting and various things. They are busy with the social media, mobile and other things, and that their precious time is living like anything. So try to be take a mentor, take a talk with your teacher, and with a good relationship, you should take your what we can say you to understand your ability, your skill. In my example, I can say when I was a student of geology. When I was studying in the BSc, my teacher said, "Okay, if you go for the MSc and other things, you may get a job, but it will not be that attractive, and it is very rare jobs are there opportunity you are having. My suggestion is you are having a good reading capacity. I think you go for the librarianship. That will pay you." Believe me, with his advice, when we are taking a lunch with him for an NSS National Service Scheme program, he was a coordinator of National Service Scheme. I applied for my library science course in AMU, and I got admission, and I made career because of just after completing my MLISC, I got a job, that's a central government job, as a permanent job in this university, and I got an opportunity to become chairperson of this department at the age of 33 or 34, and I become professor at the age of 35. So this is what you can say that I'm still believing
my teacher, his name is Rajagopal. Rajagopal, the Dr. Rajagopal, he guided me to go for this course. He's my mentor. Still, he's alive. He's my mentor. So similarly, there will be a person or teacher in your department, in your office, in your institution that will guide you, which will be the best suitable for the career for you. You can take the help of such a type of workshop. It will be helping you. Such a type of placement officer like SASA, it will be always 24 hours. He will be helping. He's ready for help for students. So be active in this field. Choose your career. Your future is in your hands. Okay, so be proactive and whatever it may be, whatever may your limitations, try to do it and think out of the box. I'm sure you will get the success in your life, always in your life. Okay, so with these words, I'm not talking much. We had a lot of interaction with the placement office and other things. With these words, I stop my talk here, and I wish all the best to my younger budding professionals, and you have a bright future ahead. Go ahead, identify your ability, identify your weakness, and try to improve it. Okay, you will have a bright future. Whatever it may be, nobody can stop you getting the success. Okay, lot of many examples you can see. I'm not going for all the things now because we have a limited time. So with these words, I stop here, and I once again thank Mr. Rafiq for giving me the opportunity to talk with my younger colleagues, and I thank this Bharat Academy for giving me the opportunity. Thank you. Over to Fatima. Thank you so much, sir, for your inputs. I'm sure participants got benefited from your inputs. Thank you. Now, Sir Mohammad Rafiq, sir, what should I do? Should I conclude or ask participants to if they have any queries or feedbacks? Yes. Participant can unmute if they have any queries, feedback. Yes, sir. Anand, sir. Participant who want to ask anything, any queries, feedback you have? Yes, ma'am. I haven't any query, but I want to. Yes, ma'am. I want to thank to our ma'am chief guest. Thank you for sir. Great. Thank you, Nazmi. Thank you, ma'am. Thank you, Nasni. Thank you so Thank you. much. I think there is no query. If you have any queries, I think you can contact the Bharat Academy. Okay, they will be conveying Okay, to us. sir. Okay, we'll be talking to you then. Okay. Shall I present my vote of thanks then? Yes, I think there is no query. I think you can proceed. Yes, sir. Okay, now is the time to end our workshop. It said, he who not thanked people, not thanked Almighty. I am highly grateful and present my vote of thanks to the organizer, delegates, esteemed and worthy speakers, and of course, our participants who actively participated in this workshop. I am hopeful and optimistic that our participants took benefit of this workshop. And with this, we end our session. Yes, sir. Thank
Thank you, participants. Thank you for the speakers once again. Thank you. I'm really thankful to Rafiq Saab and his entire team for considering my name to be the resource person of such a wonderful program. Rafiq Saab, this is only a beginning of a new association. और ये तो थोड़ा सा जाहिर है कि सेंसिटाइज करने का इसका मकसद था, लेकिन अगर आप चाहेंगे और आपके जो भी अगर आप चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं या जो भी आपका तरीका है, अगर आप मुझे किसी से बता देंगे ये कि सर ये 15-20 बच्चे हैं जिनको काउंसलिंग करानी है अपनी 1-to-1, तो आप मुझे बता दीजिएगा 2-3 दिन पहले, ताकि मैं अपना शेड्यूल को एडजस्ट करके इधर हम लोग या तो टीवी में कर सकते हैं या फिर आपके उस पर कर सकते हैं, आपके ऑफिस में जैसा भी। नौशाद साहब से भी मैं रफीक साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर से भी टाइम ले लीजिएगा, मैंने भी ही इज फ्री ईद के बाद या जब भी आपको लगता है, और वी कैन डेफिनेटली counsel some students. Yes, I'm more interested in that. I'm ready to offer myself Thank you, for sir. such, and because these are things which we can, if you are helping a student, that will be, we are giving a one career to him. Okay, so just a teaching, what I feel personally is just a teaching in the classroom is not sufficient for that. We should be always with the students with us a mentor. So I am ready to offer always, especially with collaboration with Saad and by the Academy. Whatever help will be there, we'll be ready to provide. Okay, thank you. सर कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, they are messaging. जी जी सर, ओके। मैं खातून फातिमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन जी मैं चेक कर रही हूँ सर, यहाँ पर डॉक्टर जी कोई क्वेश्चंस तो नहीं है यहाँ पर। I think feedback, not please. very sorry Mr. Anand, you can unmute yourself. Mr. Anand, मेरी आवाज आ रही है? जितने बोलिए Mr. Anand, yes sir, आ रही है। Hello. एक्चुअली मैं सुजन बोल रहा हूँ, कि रूममेट सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, your voice is breaking. नेटवर्क एरिया पे आ जाइए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा। जितेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में, आप चैट बॉक्स में आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Hello. Hello. जी आनंद सर आप पूछिए। Ma'am. Yes, ma'am. Sir, ma'am, actually my question will go to Hameed sir. Anand, please ask the question. Yes, Salam sir. Salam. Sir, my question is like, your talk, left me with no question, but I had two questions with me in the end. Some people, they have decided their target and their career goals, but in the world of technology and so much social interaction, and after that too in this after COVID-19 situation, there are so many online distractions. We go online for study, we go online for searching something, but there are simultaneously there are many distractions. So how to avoid it? And the other is the social pressure. Some students they don't decide their goals and careers. Their goals and their targets are decided by someone else. So their decisions are by taking but are being taken by someone else. So they are the passive participants of their decisions. So how to avoid it and how to handle these things, please? Your comments, sir. Thank you, Anand, for asking a very relevant question, because ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही relevant आपने का question किया है। पहला तो you talked about the distraction, how to avoid that distraction actually, which hampers our goal and our hard work. And secondly, you have asked a question that how to avoid those social pressures. So मैं पहले I would like to reply to the answer of the first part of the question. कि पहली बात तो ये आनंद के
मैंने आपसे पहले भी ये बात अर्ज कही थी कि अगर हमें अपने एम को लेके पैशन है, अगर वी आर पैशनेट अबाउट अवर गोल या जो भी हमारा टास्क इन हैंड है, अगर वो इफ इट कैरीज रिलेवेंस इन अवर लाइफ्स, अगर हमें पता है कि जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि द बिगर इज अवर व्हाई, द स्मॉलर इज अवर हाउ। प्रॉब्लम कहाँ आती है आनंद? प्रॉब्लम ये आती है कि नो डाउट हम अपना एम या अपना गोल डिसाइड करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन या जो पैशन होता है ना आनंद, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक करता है। क्योंकि अगर कोई इंसान पैशनेट है अपने गिवन अपने टास्क इन हैंड को लेके या अपने एम को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी चीजें जो है उसको जो है डेविएट कर सकती है। तो बट सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम और आप सोशल मीडिया से बिल्कुल ही कट जाएं, बिल्कुल हम थोड़ा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा कि साहब ये टाइम है 1 घंटा 2 घंटा जहाँ पे मैं अपने आप को रिलैक्स करूंगा या अपने लोगों से कनेक्ट करूंगा या अपने दोस्तों से कनेक्ट करूंगा, अपनी फैमिली से कनेक्ट करूंगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो एडिक्शन बन जाए और अगर वो हमारे हमारे काम के बीच में जो है वो अगर वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करने लगे, तो फिर वो चीज़ गलत है। तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली वो एक ऐसी चीज़ है कि आप मतलब नोबडी कैन फोर्स कि भैया आप या तो आप फोन उठा के रख दीजिए, सब मुझे देखना ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और हमें अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि क्या हम अपने एम से कितना ऑनेस्ट हैं और क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे मेरे एम से दूर कर रहे हैं। तो हमें हिम्मत करके ना कहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना मानना ये आनंद के मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वरीड आर इज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू से नो। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से और दूसरों से ना कहना पड़ेगा, तभी हम लोग खुश हो पाएंगे, वरना तो फिर वील बी वरीड थ्रू आउट अवर लाइफ। तो एक तो जो आपकी ये हैबिट है वो एडिक्शन नहीं बननी चाहिए, पहली बात। और उसमें कोई कुछ नहीं, आप कोई मदद नहीं कर सकता, आपको खुद अपने आप की मदद करनी पड़ेगी। और इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आपका जो एम है वो बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा सा डिस्ट्रैक्शन है, इसको आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने बात करी सोशल प्रेशर की, देखिए मेरा अपना मानना है हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सबकी सुननी है और सबसे मशवरा भी करना है, सबसे बात भी करनी है एंड और हमारा मकसद ये होना चाहिए वी शुड कम टू द बेस्ट ऑफ द डिसीजन। लेकिन अगर हमें ये लगता है, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माई मदर वॉज अ पैथोलॉजिस्ट, शी वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी। अब मैं उनसे अगर ये पूछूं कि अम्मा ये बताइए कि मैं एमबीए मार्केटिंग से करूँ या फाइनेंस से, तो शी वुड नॉट हैव बीन द राइट पर्सन टू आस्क। ठीक है, तो कभी कभी हम उनसे भी पूछते हैं या उनका भी दखल करते हैं जिनके बारे में वो आर नॉट द राइट पर्सन टू जज या टू गाइड अस। तो हम ठीक है, वी शुड नॉट बी एरोगेंट, वी शुड नॉट बी रिजिड, वी शुड बी ओपन फॉर सजेशंस। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि इसके आगे नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें एक ना कहने की हिम्मत बनानी पड़ेगी अपने आप से भी और दूसरों से भी। लेकिन उससे पहले वी शुड बी रियलिस्टिक एंड अंडरस्टैंड कि क्या आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी की ना सुने उसे अपनी चलाएं, हमें दूसरों की सुनना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा और फिर एक बेहतर डिसीजन पे आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे तो एक करज होना चाहिए कि हम अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, द ओनली पर्सन हु विल बी डिस्प्लीज्ड इज अस। हम सबको खुश नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इनपुट सर, थैंक यू सो मच। Anyone else? Ma'am, Jitendra, your voice is not clear. I'm sorry, your voice is breaking in between. Your voice is breaking, yes sir. So, what is it? Sir, your voice is breaking, sorry. I was not able to understand rest of the workshop till how it's going to help the career and the workshop of career. Your voice is not clear, sir. Your voice is not clear. Sorry. अगर आप कमेंट सेक्शन में कर देंगे, चैट बॉक्स में अगर कमेंट कर देंगे। Jitendra, can you please write down your question or query in the chat box? Jitendra, are you listening to me? Can you please write down your question in the chat box?
5 मिनट बस सब चला गया। लेकिन आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, दोबारा पूछिए, हो सकता है कि कुछ आपका कुछ क्लैरिटी हो जाए। अच्छा आगे Okay, sir. ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से जो होस्ट हैं या जो एकेडमी वाले वही आंसर दे पाएंगे। I think Professor or this Mohammad Rafiq sir can answer this question. एग्जैक्टली जितेंद्र साहब, हम लोग को सेमिनार, वेबिनार और कॉन्फ्रेंसेस के जरिए एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं और उन एक्सपर्ट्स को बुलाने के बाद आप तक पहुंचा रहे हैं, और जितनी भी आपके कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या और कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है, अभी पिछली बार हमने इंटरनेशनल वेबिनार ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कराया था, जिससे तकरीबन हमारे पास 500 पार्टिसिपेंट आए थे और उन लोगों ने एक्सपर्ट से कुछ कहीं ना कहीं सीखा। तो हमारे मतलब जो कोशिश है वो यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स है कैरियर्स में या किसी तरह की, उनसे उनको एक्सपर्ट उनको किसी तरह का सजेस्ट करें। जैसे कि हमने साद हमीद साहब को बुलाया, प्रोफेसर नौशाद साहब को बुलाया और आपसे इंटरेक्शन करा रहे हैं। तो इंटरेक्शन कराने का मतलब ये है कि किसी न किसी से आप किसी न तरह से नई चीज सीखे, नई बातें सीखे और अपने कैरियर के लिए बूम करें। जी जितेंद्र साहब, ये हमारा मकसद यही है, इसलिए हम इस तरह से लोगों की हेल्प कर रही है भारत डिजिटल एकेडमी, ताकि लोगों का फिजिकली आना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए कि हम बिहार है, बंगाल है, मणिपुर है, कश्मीर है, वहाँ के लोग मतलब हम लोगों को इजीली सुन सके। वैसे तो यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे आप सिर्फ वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इंटरेक्शन नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट उठाए और साद हमीद सर जैसे और प्रोफेसर नौशाद जैसे लोगों को सुने, ताकि उनका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो सारी चीज समझ सके कि हमारे कैरियर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ऐसे ही होता है, साद हमीद साहब ने बताया कि जिस तरह से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस तो होते हैं, लेकिन हम उसे सेलेक्ट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली हमें जाना कहाँ है। हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, या हमें आईएएस बनना है, या हमें कुछ और सर्विसेज में जाना है। लेकिन जब हमें एक गाइडेंस मिलता है, कोई हमें गाइड करता है और उसके बेनिफिट बताता है, तो हम लोग एक रास्ता पकड़ लेते हैं। मेरे साथ साहब ने जो बात कही कि वो भी इसके विक्टिम है और मैं भी विक्टिम हूँ, और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जितने भी रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में जो लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो सारे इसके विक्टिम है, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, और प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से तो वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। जब उनको समझ आती है तो उनको लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए। अगर हमें वक्त पर कुछ समझ होती है, अगर हमें कोई गाइड कर देता तो शायद हम कुछ और होते। तो इसीलिए भारत डिजिटल एकेडमी ने बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए हैं, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का है, कैरियर काउंसलिंग। मैं सोच रहा खाली करूंगा आज होगा। तो हमारी यही कोशिश है, यही कोशिश लगातार जारी रहेगी। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. I think there is no query further. Yeah. We should end the session, I think. End the session. Okay, once again, thank you everyone. Thank you so much for your participation. Thank you, sir. Thank you, Hameed sir. Thank you, Naushad sir. And thank you, Halima Khatun. Your
वी कांट मैं हम आपका किसी तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर सकते कि जैसे कि आपने most welcome sir. इतने कम टाइम में आपने टाइम दिया, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और इंशाल्लाह हम लोग टच में रहेंगे, और जो भी है ना तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much. Okay, thank you very much. Okay, see you then next time. Okay, thank you. Okay, thank you.